अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी रिफत मैम और आज हम क्लास 4th के EVSC के चैप्टर ईटिंग टुगेदर का कंटिन्यूशन करेंगे। बच्चों, हमने देखा कि सुमन, रजत और फातिमा के गाँव वालों ने बिहू कैसे सेलिब्रेट किया। अब हम इसके आगे पेज नंबर 95 से पढ़ेंगे। The Bihlagar was ready. The four friends ran off to change their clothes. Soon all the people in the village got together at one place. The women were dressed in yellow. They wore beautiful mekhala, chadar. Suman and her friends ran to the Bihlagar. The drums started to play and everyone started to sing and dance. The Bihlagar was set alight as people danced around it. Everyone danced till they were tired. Then they all sat down on the ground in rows and got ready to eat. The food was served on banana leaves. Everyone enjoyed the feast. Mazani, Suman, we should go and sleep now. We have to get up early tomorrow to light the mezi. तो बच्चों, जो गाँवों वालों ने बेलाघर बनाया था वो अब तैयार था और जो वो चार दोस्त थे वो अपने कपड़े चेंज करने गए और जो गाँवों वाले हैं वो कुछ ही देर में एक जगह इकट्ठे हो गए। जो औरतें हैं उन्होंने पीले रंग के कपड़े पहने थे। उन्होंने खूबसूरत मेखला चादर भी पहनी थी। सुमन और उसके दोस्त बेलाघर की तरफ दौड़कर चले गए और कुछ ही देर में ड्रम्स यानी डोल बजने लगे और सभी गाना गाने लगे और नाचने लगे। जो बेलाघर है उसकी रौनक और भी बढ़ गई। जैसे ही लोगों ने वहां डांस करना शुरू कर दिया, सारे गांव वाले तब तक नाचने लगे जब तक न वो थक गए और वो सारे एक कतार में खाना खाने के लिए बैठ गए। खाना जो है वो केले के पत्तों पे दिया गया। सबों ने दावत का मजा लिया। कुछ देर बाद मजानी ने सुमन से कहा, चलो सोने जाते हैं क्योंकि हमें कल सुबह जल्दी उठना है और मेजी यानी कि बैम्बू के हट्स में रोशनी करनी है, जैसे कि हम अपने घरों में बिजली या मोमबत्ती जलाकर रोशनी करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मिड डे मील्स के बारे में। It is almost 1 o'clock in the afternoon. The smell of food cooking is coming from a veranda and our stomachs are rumbling. We are so hungry we are not able to pay attention to the lesson in class. Ding, ding, ding. At last, now the bell rang. All the children ran out and went to wash their hands. Master Imran sent all the children to the hand pump at the corner of the courtyard. Geeta, see that everyone washes one's hands properly, he called. After washing out hands, we all stood in a queue to take our food. Some had their own boxes and others had plates. Then we all sat down in a circle with our food. Before we started to eat, we sang together. We play together. We eat together. For the good of our everyone, we will always be together. लगभग दोपहर के 1 बजे हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है वरांडा से और हमारे पेट में भूख की वजह से आवाजें हो रही हैं। हमें इतनी भूख लगी है कि हम अपने क्लास में सबक की तरफ कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। डिंग डिंग डिंग, आखिरकार बेल बज गई। सभी बच्चे दौड़कर क्लासरूम से बाहर निकले और अपने हाथ धोने लगे। मास्टर इमरान ने सभी बच्चों को हैंड पंप जो कोर्टयार्ड के कोने पे था वहां भेजा। गीता जब बच्चों से पूछने लगी कि उन्होंने अपने हाथ अच्छे से धोए कि नहीं, हाथ धोने के बाद सभी बच्चे एक लाइन में खाना लेने के लिए खड़े हो गए। कुछ बच्चों के पास टिफिन बॉक्सेस थे और कुछ बच्चों के पास प्लेट्स थे और उसके बाद वो सारे बच्चे एक सर्कल में खाना खाने के लिए बैठ गए। खाना खाने से पहले वो गाना गाने लगे।
کہ ہم سارے ساتھ میں کھیلتے ہیں، ساتھ میں کھاتے ہیں، ہر ایک کے بھلے کے لیے ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ Today there is rice with vegetables and gravy in our meal. Yesterday we had rice with nutri. Outside Didi Mumtaz's room, a list of food items has been displayed. It tells what we will get every day of the week. Would it not be wonderful if on some days we got an extra treat, money be something sweet? May be something sweet. There is another interesting thing about lunchtime at school. Every day we change our places in the circle and sit next to a different child. I really like this because I can meet new children and make new friends. آج کھانے میں چاول کے ساتھ سبزی اور شوربہ ہیں۔ کل ہم نے چاول کے ساتھ نیوٹری کھائے۔ باہر ممتاز دیدی کا کمرہ ہے جہاں پہ لسٹ ہوتا ہے فوڈ آئٹمز کا کہ ہمیں ہفتے بھر کیا کھانے کو ملے گا۔ کتنا اچھا ہوگا اگر ہم بچوں کو کسی دن کچھ ایکسٹرا کھانے کو مل جائے، جیسے کہ کچھ میٹھا، یہ بچے کہتے ہیں۔ ایک انوکھی بات یہ بھی ہے کہ اسکول میں کھانا کھانے کے وقت جس جگہ ہم بیٹھے ہیں وہ ہر دن بدلتی ہیں، جس کی وجہ سے میں ہر دن نئے نئے دوست بناتا ہوں، یہ رائٹر کہتا ہے۔ The food was not always very nice. Sometimes rice was of poor quality. Sometimes it was not properly cooked. Some parents did not like their children to eat such food. Didi Mumtaz explained to them that it was everyone's duty to make sure that the children got fresh, hot and properly cooked food. Also make sure that every child gets afternoon meal regularly. The parents also decided to help. کھانا ہمیشہ اچھا نہیں بنا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی بچوں کو کم کوالٹی کا کھانا ملتا ہے اور کبھی کبھی کھانا اچھی طرح سے نہیں پکایا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ پیرنٹس کو پسند نہیں ہے کہ ان کے بچے ایسا کھانا کھائے۔ ممتاز دیدی انہیں سمجھاتی ہے کہ یہ ہر ایک کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ بچوں کو تازہ کھانا ملے اور وہ روز کھانا کھائے۔ والدین نے اس معاملے میں ان کی مدد کی اور اب بچوں کو تازہ اور اچھا کھانا ملتا ہے جو وہ ساتھ مل کر کھاتے ہیں۔ چھوٹے بچے پورا کھانا نہیں کھا پاتے ہیں۔ Now things are better. We eat fresh, hot and properly cooked food together. The younger children sometimes cannot finish all the food, but my friends and I are sometimes still a little hungry even after we eat. Nowadays, many of the schools give food in school during the day. It was not always like this when my Didi was in the primary school. Children did not get afternoon meal in school. Some children come to school in the morning without eating anything. Imagine having to study on an empty stomach. میں اور میرے دوست کھانا کھا کے بھی کبھی کبھی جیسے بھوکے ہوتے ہیں۔ آج کل بہت سارے اسکولز میں دوپہر میں کھانا دیا جاتا ہے۔ ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ جب رائٹر کی بہن پرائمری اسکول میں تھی تو اس سے مڈ ڈے میل نہیں مل پاتا تھا۔ کچھ بچے صبح ناشتے کیے بغیر اسکول جاتے تھے اور سوچئے خالی پیٹ اور وہ بھی بغیر مڈ ڈے میل کے وہ کیسا پڑھ پاتے ہوں گے۔ اسی لیے ہر اسکول میں مڈ ڈے میل کا انتظام ہونا چاہیے۔ تو اب ہے مڈ ڈے میل ایوری چائلڈس رائٹ۔
Many children in our country are not able to get even one full meal every day. Many of them do not even go to school. Those who go to school without eating properly cannot study properly. Some years ago, the highest court of our country gave an important decision. All children in primary school should be provided with hot cooked food. This is the right of every child. बच्चों, मिड डे मील हर एक बच्चे का हक है। बहुत से बच्चे हमारे देश में भूखे रहते हैं कि उनको एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है। बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं और जो जाते हैं वो अच्छी तरह खुराक न पाने की वजह से अच्छे से नहीं पढ़ पाते। कुछ साल पहले हमारे देश के सबसे बड़े अदालत यानी कोर्ट में ये अहम डिसीजन लिया गया कि हर बच्चे को प्राइमरी स्कूल में गरम, ताज़ा और सही खाना मिलना चाहिए और ये हमारे देश के हर बच्चे का हक है। बाकी वसलाम, अल्लाह हाफिज।